हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम वीडियो देखने वाले हैं द फ्यूचर सुपर पावर इज रिक्लेमिंग बाय कैरोलिना गोस्वामी। आपने टाइटल भी देख लिया होगा। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मुझे आई थी इस वीडियो के लिए और मैं पहले हेजिटेंट थी करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ, कि थोड़े सेंसिटिव होते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ लोगों के लिए जो सेंसिटिव है, प्रोवोक हो जाते हैं, कि अगर आपको ये वीडियोस इस तरह की कंटेंट पसंद नहीं आता तो अभी बंद कर दो, क्योंकि फिर वो अजीब लगता है कि तुम्हें मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ फिर भी आप लोग देखो और फिर उसके बाद आपको बुरा लगे। और कैरोलिना गोस्वामी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने विकीपीडिया पे देखा था, वो थी प्रीटी सी लड़की है। वो तो लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटो देखी है। और वो उसने शादी की है इंडियन नेशनल से, और वो इंडिया को एक तरह से एक्सप्लोर कर रही है। उसके बारे में जो लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो दूर कर रही है। इतना ज़ोर से क्यों बोल रही हूँ। एक तरह से वो खुद भी इंडिया के बारे में जान रही है और दूसरों को भी एक्सप्लोर करवा रही है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ये मुझे विकीपीडिया से थोड़ा सा आइडिया हुआ। हमें वीडियो देखने के बाद ज़्यादा शायद अंदाज़ा होगा, और वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। In the year of 1947, the British decided to leave India. But just before they packed their bags, they had made India bleed even more by pushing it into a deadly civil war. Who would have thought at that time that just in a few decades, Indian companies would be buying and taking over the top British brands like Jaguar, Range Rover, or the famous tea brand that we know as Tetley? Who would have imagined that an Indian brand Tata would buy a steel company Coros and provide jobs to the British in their own land, but without making it a colony? Oh my God! Actually, I might be very surprised if this video will shock the international community a bit. When you hear the word India, the images that come to your mind are something like this. When the media in your country talks about India, they show you clips like this. True, yeah. But what they are not showing you, and what they are actually hiding from you, is that India also looks like अब तो मैंने देख लिया है, तो मुझे आइडिया है, ज़ाहिर है। Who could have thought a few decades earlier that the British government would be panicking and calling a special session of parliament when an Indian company Tata would decide to sell their brand Coros, which would be making thousands of British jobless? Who could have thought that in just a few decades after the independence from the British, an Indian company Tata would actually become the biggest private sector employer of the UK? It took just a few decades for the Indians to show what they were capable of, and all of this was done in a complete fair business environment, not by colonizing, looting and killing as the British did. And I am not talking about just one Indian brand. Today, there are many brands and individuals from India who are creating huge business empires on the land of the UK. But Indians are not here to take any revenge or prove a point. They are just doing what they have been always good at. And that is not just yoga, Ayurveda or IT. मैं भी योगा करती हूँ। Indians who are the masters of spirituality are also masters in business. Indian economy has finally gained momentum, and mind you, it has not got to the 5th gear yet. Probably it is still in the 2nd gear, but what is surprising that even in the 2nd gear, it has already become the fastest growing major economy in the world, already taking over China in that regard. Yeah, and India still has so much of unutilized potential which is lying in its reserves. Now let's talk about the major industries of India. IT sector. India is the world's largest sourcing destination for the information technology industry, accounting for approximately 67% of the 124 to 130 billion US dollars market. Wow. India ranks third among global startup ecosystems with more than 4,200 startups. ये वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। Science and technology. India, a country which is a nuclear power
also ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world. Wow. The Indian Space Research Organization, ISRO, has completed its mission of developing India's independent navigation system by launching Indian Regional Navigation Satellite System, My God. which means India has its own version of what in the West we know as GPS. India is constantly helping other countries like Singapore, Germany, UK, and many more Wow, ये मुझे to नहीं पता launch था. their satellites as well. It has successfully undertaken space mission to Moon and even Mars. Wow. Pharmaceuticals sector. The Indian pharmaceuticals market is the third largest in the world in terms of volume, and India is the काफी सारी largest चीजें जो मुझे पता ही provider नहीं थी of इस दुनिया generic में. drugs. Gems and jewelry sector. India is one of the largest exporters of gems and jewelry in the world. They are a hub of semi-precious and precious stones. How many of you actually knew that 95% of diamonds in the world are cut, polished, and processed in India? And most of it happens in just one city of India, that is called Surat. सूरत में. Healthcare sector. India is Wow, fast becoming a 95%. hub of medical tourism of both types of healthcare, modern medicine and natural, which includes Ayurveda and other natural treatments. ओ आयुर्वेदा पे मुझे भी The बहुत यकीन है advantage गाइस. of the new state-of-art hospitals and well-trained and high-skilled professionals, which is supplemented by its low cost. The cost of surgery in India is about 1/10 of what in the US or या Western ये तो मैं Europe. आइडिया कर सकती हूँ. India is a top destination for you, whether it's about natural treatments, a heart surgery, a cosmetic surgery, or a dental treatment, which your country's natural insurance may not be covering. US. Real estate sector. India is building future cities of the world with a massive plan of building 100 smart cities. To give you an example, Oh, no, over ये क्या 5 मैंने million देखा था. homes are under construction just in the national capital region of India. A majority of people in India still live in villages, and India is Wow. preparing itself for the biggest migration of its people from villages to the cities मुझे बताया था आप at a लोगों ने. scale which the mankind has probably never seen before. लवासा. Infrastructure sector. India is growing its infrastructure at an unbelievable speed. Did you know that its capital already has around 250 kilometers of modern metro rail? And it's going to add a few hundreds more, which is going to make it the biggest in the world, close to Shanghai. Wow. Almost all its major cities are seeing the rapid development of metro, and the construction of bullet trains connecting the major cities are underway too. Not just that, India is developing infrastructure in the other parts of the world and growing its influence Awesome. by making ports and developing other mega infrastructure outside India too. Automobile sector. Apart from all the international companies which are lining up to make the most of India's automobile market, which is literally exploding, India's own brands are not far behind. From the premium brands of Jaguar and Range Rover to the cheapest car Tata Nano, India has it all. मेरे टाइप की कार है. You will be surprised to know that India has a long list of its own automobile brands like Mahindra, Hero, TVS, हीरो के बारे में Ashok मुझे पता था. Leyland, टाटा मोटर्स. Bajaj, Force Motors, Bajaj. Eicher, just to name a few. Hero is the world's largest manufacturers of two-wheelers. Mahindra are another big name who were very close to the acquisition of Alfa Romeo a while ago. Agriculture sector. India is the largest producer, consumer and exporter of spices and spice products. It is एक वीडियो also the मैंने देखा source भी of है. the delicious mangoes, pulses and famous basmati rice Mango. that is known for its taste and fragrance around the world. बासमती राइस. The good news is that the northeast part of India has its agriculture based on the traditional organic farming, which has been untouched by the failed scientific experiments of fertilizers and genetic seed modification. How many of you actually knew
that India, which is nearly half in area of China, and the US actually has more arable land than China and is second largest in the world, only marginally behind the US. I didn't know. Also, other sectors of India are worth a mention here, such as cement industry, which is the second largest in the world. Also, India is growing rapidly in biotechnology, aviation, banking and insurance, film industry, media and entertainment, and many more. It is also a big exporter of textiles, which includes finest silk, pashmina, leather, and marble. Besides, how many of you actually knew that some of the top brains in the world are either Indian nationals or of Indian origin? Sundar Pichai, an Indian who has studied in the Indian Institute of Technology, is now the CEO of Google. Satya Nadella, who is the CEO of Microsoft, is a graduate from Manipal Institute of Technology in India. The CEO of Adobe Systems is also an Indian, and his name is Shantanu Narayan. And these are just a few names. There is a long list of global CEOs from India. So no matter where you are in the world, whatever country you may belong to, whether you are a young boy or a girl, in a primary school or a college, you must know that sooner or later you will have to have something to do with India. And it is inevitable because India is fast establishing itself as a top 3 economy of the world. And its true potential is even bigger than that. So it's better that you start educating yourself about the rising economic powerhouse that we know as India, because your future belongs here too. And as I have said earlier, India is not just developing, India is reclaiming. See you again. I love the last line. गाइस, ये थी मेरी वीडियो, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बिल्कुल मैं इमेजिन नहीं करी थी ये होगी। मुझे लग रहा था ऐसी वीडियो होगी जो लोगों को शायद प्रोवोक कर सके, या पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ ऐसे ना हो, और मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट कि इन चीज़ों से दूर रहूँ। लेकिन ये वीडियो तो बहुत ही डिफरेंट थी। इसमें जो मैं जानना चाहती हूँ इंडिया के बारे में, वो ये कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में वो सारा उसका जूस बना के वो एक समरी बना के दे दी है। अब मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप लोग बार बार मुझे क्यों कहते हैं ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। और थैंक्स इसने मुझे ये बोला ये देखने के लिए, जो बहुत सारे लोग थे। गाइस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी, जैसे एग्रीकल्चर की, डायमंड, ओ माय गॉड 95% जो उसको काम होता है वो इंडिया में होता है, इतनी बड़ी बात है। उसके बाद वो गोल्ड की, उसके बाद वो सीमेंट इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल की, और क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे, फार्मास्यूटिकल, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। इस वीडियो में इसने सारा बता दिया और मुझे बहुत पसंद आया। जो उसके लास्ट डायलॉग था, इंडिया इज़ रिक्लेमिंग, मुझे बहुत ही पसंद आया। गाइस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज़ बताओ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों की और इन्फॉर्मेशन जो आप लोग मुझे बताते हो, मुझे बहुत पसंद है। लास्ट जैसे वीडियो में आप लोगों ने मुझे बताया फ़ोन पे कौन सा सर्विस यूज़ करते हो, और सब लोग मुझे बता रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तुम लोग बताते रहते हो तुम क्या पढ़ते हो, मुझे बहुत इस तरह की इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सब मुझे बता रहे थे वो जियो यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री भी बता रहे थे कि वो क्यों इतना लोगों को पसंद है। बाकी जो थे वो बहुत थोड़े थे। एथ हेल्थ के बारे में तुम लोग बताया, आइडिया यूज़ करने वाले 1-2 था, कोई वोडाफोन का कोई एक था। वोडाफोन यहाँ पे भी यूरोप में भी बहुत ही वो क्या कहते हैं ठप हो रही है। मुझे वो वाला पार्ट बहुत पसंद है जिसमें उसने बताया कि जब भी बाहर का मीडिया कोई भी इंडिया के बारे में कोई पिक्चर दिखाता है, नॉर्मली वो वैसे ही दिखाता है जैसे अंडर डेवलप्ड है, सालों पुराने जो एक आइडिया बनाया हुआ इंडिया का। और मुझे तो थोड़ा सा ऑनेस्टली आइडिया था पहले भी, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्में देख के थोड़ा सा, ऊपर से मैं वीडियोस देख ली हूँ तो मुझे आइडिया है। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर लोगों को इधर अंदाज़ा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक को शौक नहीं होता कि खुद ही जाके किसी इंडिया के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में जाने। तो वो जो 1-2 थोड़ा सा वो देख लेते हैं, उनका वो फिर इंप्रेशन बच जाता है। नॉर्मली लोग यही करते हैं। उसने जब ये कहा कि फ्यूचर में तुम्हारा कभी ना कभी पाला पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी चीज़ें, ऊपर से कपड़े और ज्वेलरी, पता नहीं क्या था, तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी तुम्हारा पाला पड़ेगा ही इंडिया की किसी चीज़ से। और मोस्ट प्रॉब्ली हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसी चीज़ घर में जो इंडिया की बनी हुई है। गाइस, ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है। जिसने भी मुझे रिकमेंड किया सबको थैंक्स। आई होप कि आप लोग